अभी आ रही सर आवाज? Can you hear me now? Yes sir. Sir, we can hear you. But I can't hear you all. Anyway, so let's try and get into the, no, hosting rights are disabled. So I'll just call up Neeraj. The person you have called is speaking to someone else. You can wait. I'll re-log in. I'll just re-log in. Am I audible now? Just try and speak up, Yogesh. You are muted, or Anant, any one of you. Yes sir, आवाज आ रही है. Okay. Hello. So anyway, then let us do it like this. This is some of the challenges of Sure. no, hosting rights are not there still. सर अभी कर्जत में ही है. अनंत आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ योगेश जी आपकी आवाज आ रही है. सर को क्यों नहीं जा रही आवाज? मुझे क्लियर आ रही है. मैसेज कर दो. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल. हेलो नीरज, मेरे को होस्टिंग राइट नहीं है. हाँ सर मैं दे रखते हैं. Yeah, so let's begin. How do I do that? Am I audible or not to you all? Then you can Yes, sir. put your Yes, sir. questions Yes, in the sir. chat box. Just say, yeah. Okay, so we'll have to work with the chat box. I don't know what's happened. So what you do is, before I start the presentation, raise your hand and then type in the chat box so I can immediately answer. Okay, so. So this is what we are going to do today. SWOT analysis. Now, we did till yesterday, we did what was known as the external environment. So once you know what are the external environments, you examine internally what are the things that you can do, you can't do, what are the options available to you, and what could be a necessary a kind of a threat. So that's what we'll first do. So obviously this means strengths, weakness, opportunities, and threats. Okay, so this is a great way to look at basically what is within us, and then we link it to the external environment. Okay, so that is what SWOT stands for.
What's happening? Even this is not moving yet. Something wrong with my computer or what? Okay. So SWOT analysis, by definition, is looking at the current situation analysis. Like when you come to a town, like I was giving an example, if you come to Pune, then what's happening around you, that is the first thing. And therefore in marketing, that, it's basically, I mean, when you're doing business, then you are talking about, a SWOT analysis. But in marketing, it is also known as the current situation analysis or situational analysis. Now, SWOT analysis for marketing plan is distinctly different to a SWOT analysis for a business plan. For instance, finance, that, it doesn't concern the marketing so much, excepting your financial, your marketing budget. So then your strengths and weakness. Like, let's say whatever happened to Reva Electric Car Company, whatever happened to Standard Batteries, or wherever I work, that was not a concern to me. What was concerned to me is where money was concerned is how much I have to spend. Okay, so that was the next thing that was looked at. So first, look at the strength. So specific attributes, we did that exercise called fabbing. So what are the product attributes which we can take advantage of, which might be better than competition or at least equal to them? Okay, how is my brand or my offering perceived? Okay, how is the consumer? Because again, remember, marketing is about creating perceptions. Okay, creating favorable perceptions about our business or our brand or our product. Could you give me a second? I'll just switch on the fan. Suddenly it become hot. So first is how, like yesterday, Anant left. So over time, I don't know how old is Anant's retail outlet or his business, but over time there is a perception that has been, built into the minds of his customers. So at least the repeat customers come back because of that particular perception. Okay, so there is a perceived value, and if you can study that, then if it is favorable and it is in line with what you are wanting to do, then it is something that you should leverage, you should make use of, take advantage of. And then how would you serve the your customers? How does your service, your way of interacting with your customers? Now there are three aspects to servicing the customer: before sales, during sales, and after sales. Okay, now this is valid across the board. Even in an FMCG market, all the three steps have to be taken. The mix might change. Maybe before sales the activity is higher, or during the sales the activity is higher, or after sales the activity is higher or lower. I mean, that mix can vary from business to business, but all the three mixes, aspects have to be there in any kind of the business. Now, if you go back and review your own business, see what mix and what percentage you apply, and is there a scope for improvement? Okay, because basically what you are trying to do through marketing, not selling, through marketing, is convert the customer into your evangelist. So see if you can work out the mix, कि वो कैसे होता है, क्या हो रहा है, which we will discuss further down when we discuss the CRM. Okay, that is customer relationship management. Okay, वो कैसे होता है, वो क्या होता है, और फिर आपका composition क्या होना चाहिए था. Are you doing it right, or you
to course correct. So that is the next thing. Then the weakness is, what is it that your competitor is doing better than you? And if he's doing it better, then does it affect your sale? Maybe there is something that the customer does not value, and therefore it is not affecting your sale. But this is a dangerous thing. You know, it's a very thin line, and it's a very balanced line to understand whether it is affecting your sales or not. Because sometimes the sales might look as if it is going up, but it really is not, because how you are looking at it is, let's say 2 years back, the total sales were 100 units of a product. Today, the population of, or the target market has increased by 20%. So logically, if you're getting only 120 units, then you are not really doing well, because that is the surest sign that you have reached the end of the maturity stage of the product life cycle. Okay, so to determine what the competitor is doing better than you, and is it affecting the sales, you will go back and look at what stage is your product. Okay, what is it that you need to do? Now, thought needs to be given to how you can compensate or overcome these issues. Yes, type your answer, Amit. Type your answer, I'm waiting. So that is what yesterday you were not there, Amit, at that stage. Maturity is a stage where your sales has evened out or has plateaued out. आप कुछ करें या ना करें, उतना तो सेल हो ही रहा है. That is the most dangerous part of the product life cycle, where companies tend to become very, very complacent. Now, one big example of a big, well-known marketing company is HUL and their product Dalda. Okay, it's now almost a kind of a dead product. Okay, when there was some time when any vegetable oil used to be called Dalda. You know, the best marketing or best branding is when your product becomes a generic name. मतलब वो उस पूरे प्रोडक्ट कैटेगरी को अगर आप जैसे फोटोकॉपी नहीं बोलते हैं, जेरोक्स बोलते हैं, तो जेरोक्स इज अ ब्रांड नेम, लेकिन वो अब जेनेरिक हो गया. सो हमारे टाइम में कोई दुबला पतला सा होता था, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो हम उसको क्या बोलते थे, ये डालडा पहलवान है, और बाकी जो असली पहलवान है वो असली घी खाने वाला है. You know, so it was that generic. But today, where is Dalda? Because the maturity was reached, and then they forgot about it and gave scope to everybody else. Okay. Another example, again coming from the stable of Hindustan Unilever, was Surf. Okay. It had achieved, and abhi bhi, when we were talking about you know, those kind of powders for washing clothes, we still talk about Surf. But here the company acted very quickly. Okay. But by the time they could act, 798 crores of business went away to Nirma. You understand? तो उसका डिस्कवरी, मतलब अगर मेरा जो पीपीटी आप देखेंगे सेशन 14 का, उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो है. But to determine that is when you look at the total potential of that particular category of your product. It may be a particular kind of sari. तो आपको एक assessment होगा कि इतनी साड़ियां बिकती हैं पूरे मार्केट में, और एक नेचुरल ग्रोथ क्या है. अगर सिर्फ वो नेचुरल ग्रोथ आप फॉलो कर रहे हैं, okay, then it is a point to think that you are nearing your maturity. It is at that time that what you need to do
is either discount your product or come up with something new along with the product. Okay, so अगर आप फिर से कुछ करेंगे तो it becomes like a new product development. Okay, so again वो life cycle might start, छोटा life cycle होगा लेकिन it will start. Okay, so does that answer your question? Now, if the sales increase, I mean, that is the way to get a sales increase as you've put in the question. Okay, now looking at if it is affecting your business, then is there a way you can overcome that weakness? Is there a way? So later on, we'll come to that also. Is there a way you can overcome that weakness? Sometimes product से भिड़ाना ही business ये नहीं होता है. Some other innovation can also do it. Okay, so it will depend on your product, and it will depend on looking at the entire value chain as to where you can make it more efficient and more customer friendly. Okay, so that is the next thing. Now, क्या हो गया है? Then we come to opportunities. Now, opportunities are both as what you can take internally by looking at your backward supply chain. Okay, how you could make your things more efficient and therefore cost effective, maybe by bringing down price. Okay, or you can look externally where pestle, etc., come into play, and you can exploit something outside. So opportunities, again, say the main elements are changing the size. Abhi, yesterday I had explained that earlier toothpaste tubes had a smaller bore and therefore, sorry, bigger bore. And so if you pressed, large quantity of toothpaste came out. So the consumption was slow. They quietly increased the thing and none of us as customers realized it. Okay. And therefore the consumption increased. Okay. Sometimes when you're wanting to compete, now I'll give you an example of when I was working for Kalyanpur Cement. Okay. A bag of cement is usually 50 kgs. All right. So let's say a 50 kg bag was costing 250 rupees. Okay. That means 5 rupees a kg, right? So what I did was that, okay, we will have lesser 45 kgs and multiplied by 5. The psychological advantage I took that people thought it would be cheaper. Okay, but that I could do when my cement was considered at par with the other cement. Okay, you will also see that there are so many times companies advertise that you're getting 20% extra and the package is bigger. Okay, so either that or is there additional service? Now, both in finance and in saris, maybe you could offer, I don't know what are the costings, but let's say we'll take the Banarsi sari, these ladies get it polished. So you say after 1 year, if you bring the sari back to me, I'll polish at 50% of the cost or whatever. Okay. So that's a kind of a service you're giving with others are not giving at the moment. That can be copied, but you will get that head start. Similarly, Yogesh could offer in the financial service that if you maintain the account for 5 years, those SIP type, then I will give you something like this. Maybe get his company to support him. Then new packaging, I just told you what I could be doing. Okay, or it could be efficient packing. Now reusable packings have come. Many of the things come in those plastic containers instead of just cardboard, which you have to. So that is new, reusable. In fact, I saw somewhere, detergent powder being sold in buckets.
Okay, so that is another incentive that I'm getting a bucket free, you know. Then again, innovation can also be done the way you are distributing your product. Okay, so a retail counter may not be able to do, or Yogesh may not be able to do, but if you think more deeply, you will find another way of reaching out to your customer. Okay, आज से 8-10 साल पहले, 8 साल पहले के करीब, you could get on to e-commerce. Okay, today everybody is getting on. So it is not a novelty. But if you can think of another way as to how you could deliver this, your product, reach out to your customer, that's another place you can do. Then you can change the story in a way to reflect the new offering, which means promotional focus could change. So those are the opportunities that could be there for you. I mean, these are very basic. There could be many others. That will again depend on the competition. Yes, Anand, type out. So again, I'm saying that if you take these seasonal products, again, during that period, let's say in your case, the wedding season, when a lot of Banarsi saris are sold. So if you have the, what is the numbers that are sold, and then what is the natural growth that you can plot as a graph, and then look at it during that period. Okay, if let's say for last 2 times, if it is similar or the growth is just what is the natural growth, then your product has reached maturity. Because वो सभी बेच रहे होंगे, I mean एक बार मान के चलो सभी बेच रहे होंगे, तो अब आपको क्या करना है कि you have to snatch the market share from your competitors. You understand? That is an important thing, because if you don't, then you will slowly and gradually be giving it. You understand? So that's how the competition is fair competition. Any other question? Aja, why is Yogesh slow? He's usually the best man to ask me questions. Just because I can't hear? My audio device. It says it's working here, but I can't hear any of you. Am I audible now? Try speaking now. Hello. I can hear now. Yes. Oh, I think this got shifted. Yes. So go on, Yogesh, tell me. आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो Yes. जरा नहीं नहीं सर, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं रहा था. नहीं, बट वो बेचारा आनंद देखो क्या फर्स्ट क्लास काम कर रहा था. ठीक है सर, अभी पूछता हूँ मैं. पूछो. नहीं अभी पूछूंगा. अच्छा, अभी तक तो क्लियर था सर. ये स्वॉट तो एक्चुअली पढ़ा हुआ है सर, मैंने ये स्वॉट मैंने पढ़ा हुआ है एक्चुअली. अच्छा, एमबीए में किया, पढ़ा हुआ है मैंने. हाँ, ठीक है. देन इट इज द वीकनेस. ओके, वीकनेस वो होती है जो इंटरनली यू आर अनएबल टू काइंड ऑफ डू, एंड देन यू वांट टू सी कि इसको मतलब हाउ इज इट अफेक्टिंग द कस्टमर, और क्या कोई तरीका है टू get rid of it, get rid of the weakness. This is the most sensitive area in marketing, because we know that customer is a flirt. Okay, so if there is a weakness, then you have to look at it as to what can you do to either push it under the carpet or really remove it. Okay, so मैं आपको बता रहा था कि रेवा में जब मैं काम करता था तो देयर प्रोडक्शन वाज सो लो, तो वो जब देन एवरी सप्लायर हैड अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ कि भाई आपको एक कंटेनर से कम नहीं देंगे जो इंपोर्ट करना होता था. यहाँ वाले बोलते थे इतना आपको लेना, तो देयर यूज्ड टू बी ऑफन अ मिसमैच बिटवीन व्हाट वी एक्चुअली नीडेड वर्सेस व्हाट वी हैड. सो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो हमारे पास होती थी वो तो बहुत, सो मनी यूज्ड टू बी लॉस्ट. So quite often there were disruptions in production.
Now that, as a employee of the company, I'm supposed to understand, but I can't expect my customer to understand. So how do I could do one thing, either get rid of it, which I couldn't have because that's a function of money, which we did not have. Okay. Or I could try and push it under the carpet in a way which is acceptable to the customer. So how I did it. हमने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया and to get a 3D software, and we set up a very good looking computer and decorated that place very well, and the chair, rocking chair or whatever, sorry, revolving chair was like that of a Maharaja. We got it designed. So that was the expense that we did. Now, whenever the customer came and when he liked, we said, see, these are standard cars, these anybody can take. Because as I told you, that we were targeting the women, और we have already talked कि एक पार्टी में जाइए, शादी में जाइए, और अगर दो लेडी, हम और आप एक ही शर्ट पहने, एक ही ट्राउजर पहन के मिले, तो हम लोग दोस्त बन जाते हैं. बट दो लड़कियों को देखिए, दो औरतों को देखिए, अगर एक ही, तो उनका मूड खराब हो जाता. सो ये उनका एक natural, I mean, this is understanding the customer, okay, which we talked about, customer profiling and all that. So I said कि मैडम ये तो जो आप लेना चाह रही हैं, these are standard, everybody is buying this. So why don't you design your own Reva? Okay, so she said, yeah, that will be very nice. So we would say कि आपको आधा घंटा time देना होगा. Once you give us half an hour, then you can design. Women that way are able to, when they are buying things, they are able to give time. Even when they are buying vegetable, they take their own time. You and I might be in a hurry, but that's, that's nothing wrong, nothing right. So we used to get them to sit on their computer, give them a mouse and say, अब आपको ये देखिए, ये इस तरह का आप कर सकते हैं, ये कलर लगा सकते हैं, ऊपर ऐसा रहेगा, इसमें आप अपना नाम यहाँ साइन कर सकते हैं, या किसी और को ये कर सकते हैं, करा करू करके. बेसिकली अंदर का जो पार्ट्स था वो तो सेम ही होता, बट द लुक एंड फील was customized to the choice of the customer. Now, एक advantage जो मेरे पास था कि Reva could offer at any given time 2,500 shades, okay, which no other car company could do. So that was my strength. Now, once they designed and they were sure, और उसमें हम 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए ऐसे ऐड करते थे. That they didn't mind because they were getting something which was their own. Okay. So after that was done, fine, ma'am. So this is your booking amount and this is the total this thing you will have to pay. But since it has to be customized, it is not just a mass production. It is going to take time. So I hope it is okay. ठीक है. अब 10-15 दिन के बाद मैं, मतलब the instruction given to the production was कि कोई भी कार आपकी जो assemble हो रही होगी उसका फोटो लोके हमको भेजे. Okay, and that photo I would send as an email. This is where your car has reached. तो वैसे करते करते I used to be able to buy time, and this particular weakness I was able to push under the carpet. So उसके पहले क्या होता था, before we started this, that let's say 200 cars were booked, 150 cancellations hoti. Now, when this started happening, if 200 cars were booked, 195 cars continued to remain booked. You understand? तो उसी तरह से you have to see कि क्या आप कर सकते हैं अपने business में, where how you could either eliminate the weakness, that is the best. If you can't, then is there a softer way which can resonate with the customer, and can you do it? Okay. So in case of Yogesh, वैसा problem तो शायद ही होगा, लेकिन in your case, Anant, from time to time you may need to do this. Now the final this thing is we have already talked about opportunity. Now threats are new competitors entry. We will do it later on
There is something known as Potter's 5 forces. Since Yogesh has done his MBA, he would know. So there are 5 forces that act on any business. And obviously the impact is on the marketing. Okay. So one of the new, this thing is how easy or difficult it is for people to get into your business. Okay. Or how also easy or difficult it is to get out of your business. Okay. Now, it may be easy to get in, but it may not be that easy to come out. Like, for instance, let's give you example of big companies. General Motors and Ford have decided to walk out of India. But when they entered India, they had to say that for 15 years, they will be providing the, the parts for maintenance, etc. That's a commitment given, and they cannot back out of it. And if they back out of it in India, the implications can be even in US. ये तो unreliable company. Okay. Daewoo Motors, which closed a long time back, had to still struggle to give those parts. Okay. So, competitor का entry exit कितना easy होता है और कितना difficult होता है, that's one barrier. Okay. Now, barriers can also be created by you being a very, very strong niche player. Just say, let's take, again, I'm taking both your example. Now, you are in Banaras. Okay. And Yogesh is in Vapi. Right. ये दोनों culturally different. Now, let's say some multinational brokerage house, in case of Yogesh, can come, and in your case, a multinational company comes and sets up a factory for, making the kind of saris you make. So naturally, they have got deeper pockets, they can advertise and all. So at that particular point of time, if you discover a niche which is very, very close to your culture, then that is something which will become very difficult for large company also to fight, because no matter how much they advertise, the local culture has its own. I just gave you the example that McDonald's world over is the #1 fast food, company. Okay, their McDonald's, Mac burgers and all that are even in India, but not in Philippines, because Philippine culturally are, differently family oriented. Okay, they like to spoil. जैसे हम अपने बच्चे को रोकते हैं, वो कुछ करता है तो एक दो लगा भी देते हैं. Philippines में वैसा नहीं करते हैं, तो they will break, they will do things. So वहां पे Jolly Bees करके hamburger restaurant, they do same business as McDonald's. आप पूरे Philippines में travel कर लीजिए, they are across the road, and you can see the difference in the crowd. Okay, so what they have done is, no matter they are facing a multinational, but in Philippines they are the king. Okay, because that cultural advantage McDonald's cannot copy. See, McDonald's is able to give you food very fast only because they follow a system. So they can't break that system. You understand? In fact, learning from that, I used it that, okay, I will not fight entire Bombay. I will only look at Andheri RTO. Because I knew that no matter what Excite does, they will not be able to, do this. So I started culturally aligning with the customer profile there. You understand? So that is the thing. Then another thing is, does your product have major failures or major complaints? Now, when we do CRM, we have to look at this. If your product has major complaints, then that's a massive threat. That's a massive threat. And this is the example that I was giving yesterday. This is the example I was giving yesterday about ambassador cars. That though 2 generations, 3 generations have passed, we are not going to look at ambassador. They are trying to make an effort to come back by
modernizing the look and feel, but it will be an uphill task. Okay. Then reduction in कहीं आपने जो promotion आप कर रहे थे वो आपको कम तो नहीं करना पड़ गया because of variety of reasons. Okay. Customer का changing tastes, that also needs to be followed, particularly in the case of saris. मतलब ladies, the taste can change. And you must be on top of it all the time कि ये latest क्या चल रहा है. And then changes in the market conditions itself. You know, economic conditions or something like that. So these are like threat. Or let's say in the area in which you are operating, Anand, there is a huge, let's say Reliance comes and opens a shop similar to yours, but a bigger one. It becomes the market, the complexion of the market has changed. So it's a threat. It can happen because there is what you are doing is not too much technically, oriented. Or let's say what Yogesh is doing is not too much technically oriented. So it's a threat. So what would you do? Okay, how would you put away the threat, or how would you protect yourself? So once you put this in a matrix, then you get a clear picture of how you need to go about your marketing. Then those 4 P's or 7 P's or 4 E's or 7 E's can be put in a different mix. The marketing mix itself can change that, okay, if I do this, then am I going to be able to take care of this? So these are the 4 things. Now, we did pestle earlier yesterday, and we are now doing SWOT. Now, both have to be married together so that you are able to take advantage of both external and internal, conditions, the environment around you. So, the pestle takes care of external environment. The SWOT takes care of internal environment, and therefore, once you marry them, then you get the opportunities and the threats, right? Is that clear? Yes, sir. Yeah. So here is what happens. Strengths and weaknesses are completely internal. Opportunities or threats relate to the pestle. Whenever you are looking at something as opportunity, you measure it against this. Political, economical, sociological, you measure it against that and then compare it what your competitor is doing. Okay, you will, even now when competition has become and there are so many people, you will still find gaps. That's the beauty. That's the beauty. If you concentrate on this for looking at what is the gap, and can that gap be something which you can, it's like in a dam, if there is a small damage, if the damage is not repaired in time, then the dam opens up and the water comes out flowing. So if you can discover that gap and analyze how you can widen it for your business. Okay, and it can be on all these 6 parameters. Okay, so marrying SWOT with pestle is advantageous. So this is what it is, what you need to do. I think this can be only read, no point in wasting time on that. Now, once you have done your SWOT, I don't know, Yogesh, if you have done this in your MBA, there is another way to assess your marketing strategy, and that's called SOAR. Okay. No, sir. ये नहीं किया था मैंने. हाँ, ये लेटेस्ट है और मुझे अंदाज था कि शायद आपने नहीं किया. Yes. SOAR क्या होता है कि it is strengths, which is where if you have something strong, if you have some talent, then you have certain aspirations out of it, right? कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं ये बन सकता हूँ. Like let's say I enjoy playing cricket and I am a good cricketer, so I will represent the Indian team. तो मेरी aspiration तो हो सकती है ना वो. Okay. Right, sir.
ओके उसी तरह से जब आप अपॉर्चुनिटी एनालाइज करेंगे बोथ फ्रॉम सॉट एंड पेस्टल एंगल, तो ऑब्वियसली यू लुकिंग एट सम रिजल्ट्स. Okay, so Right. again, taking the advantage that Yogesh is a great cricketer and he enjoys, so he has the natural talent to do that. Now, Yogesh will now look at what are the opportunities. His aspiration is to represent Team India. So, what are the opportunities available to him right now? Play club cricket, represent the district, play for the state, wherever he can, and what is the result that he expects out of it. Okay. So Right. that is what the whole thing is, you know. So SOAR is the final matrix when you are preparing your marketing strategy. Once you have done those two analysis, SWOTs as well as PESTLE, then you look at what is your SOAR matrix. That means strengths, which will result in what should be your aspiration or where you want to reach, and what are the opportunities available to you, taking into account the opportunities and the threat. Okay, and in the backdrop of your pestle, तो आपको गैप्स जो मिलेगा तो उससे आप क्या रिजल्ट. यस सर ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, लेकिन ये जो सौर आपने बताया ये तो सक्सेस मेजर करने का एक माध्यम है ना, कि मेरा रिजल्ट क्या है. नहीं, तो वो आप अभी ये सोर इज स्टिल एन एस्पिरेशन, स्टिल वेयर यू वांट टू रीच. तो जो आपकी मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ. करेक्ट. So, where is the gap? कहाँ तक गैप नहीं, कहाँ तक आप पहुंच सकते हो. सो आपका जो स्ट्रेंथ है, अगर उसको आपने बैकड्रॉप में लिया अपना पेस्टल के, तो आपका छन के जो रियल स्ट्रेंथ है वो सामने आ गया. राइट. उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि आई विल बिकम अ नेशनल लेवल फाइनेंशियल कंसल्टेंट. तो आपकी एस्पिरेशन तो हो सकती है ना. करेक्ट. ओके, तो उसमें जब आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस देखोगे तो नेशनल लेवल बनने के लिए प्रमोशन कैसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार, नेशनल तो ठीक है, अब वो नहीं हो सकता, चलो गुजरात का बन सकते हैं. करेक्ट. ओके, तो वो आपकी एस्पिरेशन होगी कि आई वांट टू बी एन ऑल गुजरात प्लेयर इन दी फाइनेंशियल. उसी तरह से इन द गुड्स सेक्शन, लेट्स से अनंत विल लुक एट कि यार मैं ये मेरी जो इस किस्म की साड़ी है ये बेजोड़ है. ओके, नाउ व्हेन ही डज द पेस्टल स्कैनिंग ही नोज कि इसमें से मैं ये चीज निकाल सकता हूँ. ओके सर, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्वॉट एनालिसिस है वो कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने से पहले हम उसको एनालाइज करते हैं, राइट. जबकि सोर जो है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बार हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया तो इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा रिजल्ट कहाँ तक पहुंचा है और क्या गैप है वो फाइंड आउट करने. नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि जब आपने वो सॉर्ट कर लिया जी, तो आपको पता लग गया, अब उसको फिर से मेजर करो जो हम लोगों ने अभी बात किया था सॉर्ट एंड पेस्टल्स के साथ. ओके. अब बनाओ सोर का मैट्रिक्स, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होंगी आपके जो कॉम्पिटिटर के पास. देखो, कोई भी बिजनेस आदमी करता है या इवन नॉन फॉर प्रॉफिट भी करता है तो ही लाइक्स टू मोनोपोलाइज कि जहां कोई कंपटीशन. सो देयर इज, इफ यू डू बिजनेस स्ट्रैटेजी तो यू विल हियर अबाउट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एंड रेड ओशन स्ट्रैटेजी. आप लोग को मालूम है क्या है? we'll divert a little but you should know about it. No, sir. सर बताइए सर. ओके, सो एक आप जब ओशन को देखते हैं तो ब्लू रहता है ना. करेक्ट. उसके नीचे बहुत सारी मछलियां हैं और भी किस्म के जानवर हैं जिनके लिए सबके लिए एडिक्वेट खाना है, तो एक दूसरे को अटैक नहीं करते. अब उसी में से खाना आप निकाल दो और लिमिटेड खाना हो, तो फिर क्या होगा कि ईदर दे विल बिकम कैनिबल्स, एक दूसरे को खाना लग जाएंगे, या एक दूसरे को मार के अपना खाना लेंगे. राइट. ओके, तो उस समय ब्लड शेड हो जाएगा तो ओशन रेड हो जाता है.
तो आप अगर एक ऐसे फील्ड में चले जाओ, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी, इवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे बना रहे हो कि वहां पे कोई नहीं, तो आप एक ब्लू ओशन में तैर रहे हो जहां खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। और अगर बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं तो आपको उसमें स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा में काम चलाना होगा, कभी किसी को काटना होगा, कभी कोई आपको काटेगा। तो अगर वो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है तो आपको ये स्वॉट और पेस्टल के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा कि आपके कौन से स्ट्रेंथ्स ऐसे हैं जो आपको ब्लू ओशन की तरफ ले जाए, पहला। अब अगर वो ले जाएंगे तो आपको कहां तक ले जाते हैं, दैट्स योर एस्पिरेशन। ओके, ठीक है। फिर उसी पेस्टल और स्वेट से आप स्वॉट से आप निकालोगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। राइट। ओके, तो उससे आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप करोगे तो मतलब कितने दूर तक कर सकते हो। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आपको कॉपी करेगा ही। राइट। यू विल नॉट बी द ब्राइटेस्ट पर्सन ऑल द टाइम। करेक्ट। सो आपको मालूम है कि भाई 2 साल तक मेरी ये स्ट्रैटेजी चलेगी, 5 साल तक ये स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके तब तक तो बाकी जितने लोग मार्केट में वो भी करने लग जाएंगे। करेक्ट। सो द सोर मैट्रिक्स will give you a good idea as to how to set up smart goals to measure. Yes, समझ में आ गया सर। You understand? Yes. तो इसलिए ये एलिमेंट मतलब सिलेबस नहीं है, लेकिन आई थॉट आई शुड टेक इट अ लिटिल बियॉन्ड द सिलेबस, बिकॉज आप लोग सब अब you are already working and are in business. Right, sir. Okay, so basically you have to form ultimately the SOAR matrix. Right. And SOAR matrix is a very dynamic document. Normally, a good practice in finance is review it every quarter. In goods like saris, it should be reviewed every 6 months, taking into account seasonality. तो अगर उसको बैठ के मतलब आधा घंटा अगर देखो कि वो रिजल्ट जो मैं एस्पायर कर रहा था वहां के कहा कितने करीब पहुंचा हूं, इट्स नॉट अ मेजर आर दो स्मार्ट गोल्स। राइट। ओके, सो स्मार्ट गोल से आप अपने सोर में कहां तक पहुंच गए, समझ गए। स्ट्रैटेजी इज नेवर अ पैसिव डॉक्यूमेंट, इट्स अ वेरी वेरी एक्टिव डॉक्यूमेंट। राइट। ओके, तो ये हाँ, जब आप ये कर लोगे तो फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी कर ली। करेक्ट। ओके, अब नाउ वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट मस्ट बी डन, और ये जरूरी है, आपको लगता है ये सब तो कर लिया, मेरे को आता है, डॉक्यूमेंट इट सो दैट यू कैन रीड व्हाई यू मेड इट। ओके, सो द व्हाई, द हाउ, द व्हाट, द व्हेन, ऑल दैट इज डॉक्यूमेंटेड, सो दैट जब आप रिव्यू कर रहे हो तो कभी कभी क्या होगा कि रेलेवेंस उस चीज की खत्म हो गई, तो यू मे हैव टू अगेन ट्वीक योर स्ट्रैटेजी और चेंज योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैनॉट बी रिटन इन स्टोन, ये एक बार लिख दिया तो वही होगा। ओनली द विजन एंड मिशन कैन बी रिटन, वो भी मिशन भी कैन बी ऑल्टर्ड अ बिट, द विजन कैनॉट बी ऑल्टर्ड, at least not for a very very long time, 10 15 20 years. Okay, वो अनंत आपको मालूम है, मतलब I had given a very simplistic explanation of what is a vision. No, sir, I think I wasn't there for the session. Okay, so vision is something like what is written on a tombstone. जो समाधि बनती है तो उसमें लिखते हैं ना, यहाँ पर ये आदमी ऐसा था। Or another way of looking at it is, what do you think the people will talk about you, or what do you want the people to talk about you when you are not in the room? अनंत अच्छा लड़का है, अनंत बहुत शरीफ लड़का है, कभी किसी लड़की से कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है, यू नो, इफ यू वांट, तो ये आपका विजन है कि भाई मैं अगर कमरे में नहीं भी रहूंगा तो लोग ये बात करेंगे। मिशन क्या होता है? मिशन वो होता है कि what do you want to hear from people when you are in the room. Okay, तो मिशन से आपका विजन बनता है कि अगर आप रिपीटेडली कोई चीज करेंगे तो वही लोग बात करेंगे, और धीरे धीरे
वो आपका इंप्रेशन बच जाए। बट विजन बनाने के पहले आप अपना एक वैल्यू सिस्टम डिफाइन करते हैं, ये जैसे योगेश ने किया हुआ, उस कि आपके लिए क्या गुड वैल्यू है। ओके, वेदर जो आपके जैन धर्म में लिखा वो गुड वैल्यू है, या उसमें कोई और चीज ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैं आपको खाली एक एडवांटेज, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन योर रिलीजन। सो एक वैल्यू सिस्टम से ही आपका विजन निकलता है कि भाई ये सब करने के बाद मैं चाहता हूं कि जब मैं कमरे में नहीं रहूं तो भी लोग ऐसा ही बात करें, ये मेरा इमेज है। समझ गए? अब जो मिशन को आपको अचीव करना है तो एक ही दिन में नहीं होता है। दैट मीन्स आप छोटी छोटी कि भाई पीपल मस्ट नो दैट आई एम वेरी नॉलेजेबल अबाउट सारीज, तो ठीक है, हर रोज मेरे को 1 घंटा निकालना है अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज। ओके, हर रोज थोड़ा सा टाइम निकालना है हाउ टू टेक केयर ऑफ साड़ीज और वट एवर, मतलब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, और वही उसको जब टाइम बाउंड आप कर देते हैं तो उसी को गोल्स कहते हैं। So any strategy formulation will have these three things first and then all this. तो अब आप you are ready to make your strategy. So अब when you are building up your strategy, and we know that customer is the most important reason, like we know that Mahatma Gandhi had said customer is the very purpose for which we are, और बहुत सारे ज्ञानी लोग बहुत कुछ कहे। और अब जब हम ये सीख गए हैं कि 4 E's होना चाहिए, हम सो कस्टमर शुड बिकम आवर इवेंजलिस्ट, तो लेट्स गो बैक टू रिलीजन। ओके, आप चाहे कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, उसके जो गुरु लोग होते हैं वो लोग प्रचार करते हैं। ओके, एंड इट इज डन सो नाइसली फॉर irrespective of the religion that people get taken in. ओके, और हम फिर ध्यान देने के लिए भी जाते हैं और सुनने भी जाते हैं और हमको अच्छा भी लगता है। तो आप अपने कस्टमर्स को वही बनाना चाहते हो आपके लिए। अब मान लीजिए हिंदू धर्म का एक एस्पेक्ट है, तो देर आर सो मेनी गुरुज दैट आर अराउंड, जिसके हम जाते हैं। टेक योर जैनिज्म, उसमें टेक योर बुद्धिज्म, टेक सिख, टेक इवन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तो इनके गुरु बनते जाते हैं विच आर द इवेंजलिस्ट। तो अब हमको मार्केटिंग में क्या है कि हम वैसे लोग हमको चाहिए जो हमारी बात लोगों तक पहुंचा सके। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उनसे एक रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। ओके, और वो रिलेशनशिप इतना इंटीमेट होना चाहिए, इतना फ्रैंक होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि बिफोर दे कैन टेल अस वी शुड बी एबल टू एंटिसिपेट एंड लुक आफ्टर दैट। एक अच्छा गुरु क्या करता है, यही तो होता है ना कि अपने शिष्यों का ही इज एबल टू एंटिसिपेट कि उसकी ये प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारी हम लोग स्टोरीज पंचतंत्र टाइप में पढ़ते हैं ना, ये कि वो जानता था कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है लेकिन उसको एक्सपीरियंस कराए। सो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट फेज इन विच वी आर कमिंग, which is known as customer relationship management, also known as CRM. So CRM is relatively new to marketing, but CRM क्यों जरूरी होती है, या what are the things we require to set up a CRM for our business? हमारे बिजनेस तो छोटे हैं, हमारे बिजनेस तो मतलब बड़े वाले लोगों की तरह है नहीं, लेकिन हमको भी कस्टमर रिलेशनशिप उसी लेवल का मेंटेन करना है, तभी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो बड़े वाले हमको मार के भगा देंगे। सो अमित और योगेश, आप बताओ कि आपके लिए क्या आप करते हो इस सिलसिले में सर? इसी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। सर मेरा तो प्राइमरी फोकस जो रहता है वो सर्विस के ऊपर है, क्योंकि जितनी अच्छी सर्विस मैं दूंगा उतना ही अच्छा मुझे रेफरेंस मिलेगा। ओके, व्हाट अबाउट यू अमित?
मेरा प्राइमरी फोकस रहता है आफ्टर सेल सर्विस में, बिकॉज द कस्टमर उसको वो तो वही है, सेम एज सर्विस। तो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है उसका, पहला है कलेक्ट डेटाबेस। ओके, जब भी कोई आता है आपके पास तो ये योगेश का तो नेचुरली होता होगा बिकॉज वो फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो आ गया। आपके केस में रिटेलिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, बट इफ यू कैन कलेक्ट द डेटाबेस और उस क्वेश्चनर को या उस फॉर्म को अच्छी तरह सोच समझ के फिल करवाया, मतलब क्वेश्चंस उस तरह के पूछे, तो क्या हो जाता है कि यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट कस्टमर बेटर। ठीक है, फिर उसको ग्रुप करके एक सेगमेंट बनाए। देन अ वे टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। तो आप क्राइटेरिया फिक्स कर लो कि भाई आप किस प्रोडक्ट से या किस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफरिंग से आप इसको रिलेट करोगे। उसमें कुछ भी नया हो रहा है, बोथ इन सारी और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आप यू हैव अ रेडी डेटाबेस जिसको आप बात बता सकते हो। उसमें हो सकता है कि 100 लोग हो जिसमें 20 बोले हाँ ये भी ले लेते हैं, बाकियों को आप एजुकेट कर सकते हो कि ये एक और अपॉर्चुनिटी है जिससे आपका ये फायदा होगा, वो फायदा होगा एंड ऑल। वो एक तरीका हो गया रिलेशनशिप बिल्डिंग का। फिर उसके बाद ये स्ट्रैटेजी से एक और चीज जो आपको समझ में आएगी वो है कस्टमर का चेंजिंग टेस्ट, particularly more useful in the case of Anand, कि अगर आप उनको टाइम टू टाइम कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये होने जा रहा है, आपका क्या ख्याल, तो हो सकता है आप 100 को भेजे 10 ही रिस्पॉन्ड करें, बट दैट इज इनफ फॉर यू टू गेज कि भाई टेस्ट चेंज हो रहा है। ओके, उसको अगर कहानी के सूरत में आपने भेजा, मान लीजिए तो कि एक कहानी बना करके और उसके बाद पूछिए, जैसे आप लिंक्डइन में जाएंगे तो आपको वहां पर भी सर्वेज मिलते हैं, उसके पहले एक रामायण लिख करके भेज देते हैं। वो रामायण मीन्स छोटा सा रामायण, ओके, 1 पेज का रामायण कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, तो आपका क्या ख्याल है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपको चेंजिंग टेस्ट। नाउ how you can apply Yogesh in your business is again a matter of being innovative, but this is how you can capture and keep the customer engaged with you. So most important thing about customer relationship management is not that after sales service only, it is to keep the customer engaged. उसको कोई और सोचने का मौका ही नहीं दो। Again getting back to अनंत, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं है। अरे बड़े खुशकिस्मत हो यार। जस्ट 22। हाँ, सो बड़े खुशकिस्मत हो। लेकिन जिसकी शादी हो गई है तो अब मैं बताता हूँ, पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, मत बताओ, लेकिन गर्लफ्रेंड होगी। तो क्या होता है कि वाई आर वी इन्वॉल्व विद आर बेटर हाफ और बिटर हाफ, जो भी बोल लो, वाई आर वी इन्वॉल्व? बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं विच कीप्स मी इन्वॉल्व। ओके, हम लोग बाहर जाते हैं, ladies may stay at home or they are going out, why don't they look at, एक तो of course social pressure, but more than that there is a personal intention of not looking at anybody that way. You can remain friendly but not, you are, because you are committed. Okay, so commitment maintain कैसे होता है? Commitment maintain ऐसे होता है कि हर रोज they say ना that you have to work on your marriage or you have to work on your relationship. So it is not only in this man-woman relationship, even अपनी दोस्ती. Why do we call somebody a best friend और बोले कि यार मैं उसको रात के 12 बजे भी बुलाऊंगा तो आएगा? So how do we keep him engaged? Okay, so one of the major reasons for doing customer relationship management is to make sure that the customer does not want to think of any other competitor. Okay, therefore एनालिसिस ऑफ, आई मीन, जैसे आप दोनों बिजनेस के अपने अपने बिजनेस के मालिक हो, आपका बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ योर अटेंशन मस्ट गो ऑन दिस, ये कैसे चल रहा है। खाली आफ्टर सेल सर्विस नहीं,
जो लोग आते हैं तो क्यों आते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं उसको भी पता करने की कोशिश की क्यों नहीं आते हैं, आप क्या कर सकते हो, तो ही तो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिटरमिन होगा। So, इसको अगर मार्केटिंग करना है तो इसको आपको, हाउ वुड यू इन्वॉल्व योर कस्टमर इन ऑल द थ्री, दैट इज बिफोर सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स एंड आफ्टर सेल्स। आप लोग दोनों ने अपने सर्विस मींस आफ्टर सेल्स या बिफोर सेल्स की कर दी, बट उसके बाद वो एंगेजमेंट लेवल कहां पर रुकता है, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्यों आप वैसा करना चाह रहे हो, बिकॉज हर कस्टमर को आप एक फ्री का सेल्समैन बनाना चाह रहे हो। ओके, वही कस्टमर आपके यहां खींच के लाए। अब जैसे योगेश ने मेरे को बताया था कि कोई इसके कस्टमर हैं जो फिलीपींस में रहते हैं, और उन्होंने ही, वो तो इनसे लेते ही हैं, बहुत सारे दोस्तों को भी बनाया, तो ऑब्वियसली देयर वाज समवेयर ही वाज यूजिंग CRM as far as that customer is concerned. So if you were to look at that entire strategy, can he apply it to his 800-900 clients? Okay, it can't be done one by one, so it will have to be segmented and targeted. Okay, you can't go and meet all the 800-900 people every month, every day or every month. So you have to figure out a way how to reach them as often as possible. कुछ ऐसा छोड़ के जाओ कि वो आपका, आप में इंटरेस्ट रहे। तो कल, करेक्ट सर, या कल मैं आपको बोल रहा था, आई थिंक दैट टाइम अनंत had gone out, that rugged people या इनको क्या नाम है, यंगस्टर्स को, जो एडवेंचरस पीपल है, उनको कोई गेम में फंसाओ। लेट्स हैव अ, लेट्स से थिंक अबाउट अ गेम अराउंड साड़ीज। ओके, अब वो गेम आप, ऐप डेवलपमेंट में आप 10-12 हजार रुपए लगता है मैक्सिमम। सो आपने वो गेम डेवलप करा लिया, और वो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भेजिए कि आप ये गेम खेलिए, और ज्यादा ज्यादा उसमें बोलिए 200 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जीत गए तो। ठीक है, तो 200 रुपए से ना तुम्हारा कुछ जाएगा ना उनका कुछ जाएगा, बट वॉट यू विल गेट, first you'll get the database, more accurate database, and second their engagement with you. Okay, उसी तरह से जो उस तरह के लेट्स से मिड लेवल लोग हैं आपके पास योगेश, think of some kind of a game around financial products, not a quiz but एक गेम खेलो, कुछ देर तक जीतना आसान करना चाहिए कि ये राउंड तक तो आप जीत गए, तो उसमें आप छोटा सा कोई गिफ्ट, मतलब चॉकलेट ही सही, जैसे मैं अपने बच्चों को ऐसे टेम्प्ट करता हूँ कि जीत जाओ तो एक कैडबरी का चॉकलेट दे देता हूँ, मतलब आई एम सेइंग कीप अ स्मॉल गिफ्ट विच इज नथिंग, ओके, विच इवन इफ यू विल अदरवाइज गिव, तो वो दे दो कि हाँ इस लेवल पे आपको ये मिल गया, आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेवल, तो क्या होगा कि उसमें क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ती जाती है। नाउ इफ यू एनालाइज, you will find that almost none of your competitors are doing it. Okay, tell me Yogesh, if any of the financial consultants are doing it. No sir, no one is doing it. What about you, Anand? No sir, no one is. So that gives you an edge, because then you are keeping them engaged, और अगर वो जीत ही गए तो आप वो 100-200-500 रुपए का जो डिस्काउंट उनको देना है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, because they will come back to your shop to buy, so it becomes a revenue expense. I'm just giving an example. You can think of something else. Yes. But the idea is to keep them involved and keep them curious. कि यार अनंत की दुकान से अब नया क्या होने वाला है, या योगेश के कंपनी से अब नया क्या आएगा। ओके, एंड आजकल गेम डेवलपमेंट, मतलब मेरे तो सुनने में आया कि गुजरात वगैरह में तो 5-6 हजार में भी बना देते हैं, एक ऐप ही तो बनाना होता है। ओके, so you can think of something like that. I mean, this is one example. Think of other ways in which you can engage your customer. एक काम जैसे आप लोग कर सकते हो कि एक एनुअल काइंड ऑफ एक
हर इंसान में बिलोंगिंगनेस की जरूरत हमेशा रहती है। तो यू कैन फॉर्म, जैसे आपके बिजनेस का क्या नाम है मैम? सर कुंजन कंपनी। कुंज। कुंजन कंपनी, यस सर। कुंज कुंज, तो आप बोलो कुंज परिवार, ओके। और एक साल में एक बार बोलो कि हम एक छोटा सा डिनर पार्टी कर रहे हैं, या कुछ ऑफ कोर्स बजट परमिटिंग, या कुछ ऐसा एक्सरसाइज जिसमें वो कम्युनिटी फीलिंग हो, और वो डिनर पार्टी नहीं हो, वो उसमें इवेंट्स हो, मतलब वो चम्मच में नींबू रख करके दौड़ी लेडीज, ऐसा ऐसा करा के एक फुल डे का प्रोग्राम करो जहां पर आपके कस्टमर्स ज्यादा रहते हैं, ओके। तो उनको एक वो एक मतलब कहते हैं ना वार्षिक उत्सव बन जाए। उसी तरह से योगेश कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट। मतलब ये सब तरीके, दैट डज नॉट मीन कि यही खाली तरीके हैं, यू कैन कम अप विथ इवन बेटर वेज। राइट सर। यस सर, यस सर। तो उसमें क्या होता है कि वो इंतजार करते हैं, यार आपका वो एडमिशन ये नहीं आया, इनविटेशन नहीं आया, उसका वो नहीं आया, फलाना नहीं आया, ओके। और आप क्या प्राइस दोगे उसमें, मतलब कोई बर्तन दे दो, जैसे साड़ी वाड़ी वो तो लेडीज के लिए है, कोई अच्छा सा 300-400-500 रुपए का बर्तन लेके दे दो, यू अंडरस्टैंड। तो उस तरह से, उसी तरह से आप कुछ वॉलेट टाइप कुछ दे दो, विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, आइडिया इज टू कीप इन देयर माइंड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जब भी वी आर गिविंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स, तो particularly upper middle class and upper class, they will never like to carry your brand, okay। लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा उसमें अपना नाम लिखवाते हैं, ओके। तो वो लोअर इसका होता है, सो दैट हैज टू बी डन वेरी सटली। अब स्टैंडर्ड बैटरी में भी हम गिफ्ट देते थे, इतना दूर तक गिफ्ट दिया कि हम उनके बाथरूम तक चले, मीन्स वी गिफ्टेड वेरी हाई क्वालिटी बेदिंग टावर्स, ठीक है। बट उसमें बहुत सटली स्टैंडर्ड बैटरी लिखा हमने, जो यही समझता है। फिर हम टाइज देते थे एग्जीक्यूटिव्स को, तो लोग कहते हैं ना ऊपर ही में टाई का वो प्रिंट कर दिया, हम क्या करते थे, पीछे का जो लेबल है उसमें एक छोटा सा ये किया। फिर हम अब ये योगेश के बहुत काम आएगा। योगेश, आजकल क्या हो गया है कि पेन पे आप लिखवा सकते हो उसका पर्सन का नाम, राइट राइट सर। हाँ। ओके। तो उसका मान लो आप ऐसा पेन लो जिसका जो वो है जो कैप है वो थोड़ा ब्रॉड हो, राइट। और उसके ऊपर इतनी ही जगह हो छोटी सी जहां पर आपका लोगो आ सके, मान लीजिए आपकी कंपनी का लोगो हो, राइट। ओके। और दूसरे तरफ जिस कंपनी ने भी आपको सपोर्ट किया उसका लोगो आ सके, करेक्ट। ओके। अब वो पेन में उसका नाम लिखो अच्छे स्टाइल से, गुड फॉन्ट। मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव सीन दैट people value it a lot because it personalizes very well and it advertises enough for him. राइट सर। तो कभी ये पता करके देखो उसके आपके वापी के आसपास कौन सा वो जगह है जहां रामायण शूट हुई थी, वहां बड़े सारी पेन की कंपनीज हैं। उमरगांव। हाँ, उमरगांव, करेक्ट। सो वहां से पता करो। तो आप मान लो अपने जो 800 हैं उसमें भी सेगमेंटिंग के हिसाब से आप पेन चूज कर लो उस तरह का, और उनको एक पर्सनलाइज गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट या दिवाली गिफ्ट भेज दो। राइट सर, ठीक है सर। मतलब दीज आर द वेज। उसी तरह से आप कुछ कर सकते हो, थिंक अबाउट इट, लेकिन उसको मतलब सटल करना चाहिए। ये बड़ा बड़ा जो प्रिंट करते हैं ना, देन यू लो डाउन वो काम मतलब जो लोकल डीलर ये होते हैं ना, ये परचून की दुकान, वो करें, ओके। बट यू डोंट डू अनलेस यू आर अ ब्रांड, लाइक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए कि वो आपका ब्रांड इज द स्टेटस, राइट सर। तो वो आप और हम अभी नहीं है। लाइक नाइके बड़ा बड़ा लिख दो, ओके। ओके, तब वो बड़ा बड़ा लिख। अगर उस स्टेटस में आप पहुंच गए तो डू, बट अदरवाइज डू इट वेरी सटली, वेरी क्वाइटली, ओके। ओके।
क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, आप हर कस्टमर को से पर्सनलाइज करना चाह रहे हो। अब पूना में मैंने ये करवाया था, मतलब वी वर डूइंग अ कॉन्फ्रेंस, ओके, और आज तक मेरे को उनका आता है कि आप नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हो, बिकॉज दे फाउंड दिस वेरी इनोवेटिव एंड दे आर टिल डेट मेरे को फोटो भेजते हैं कि वी आर स्टिल यूजिंग द पेन। ओके, ये कॉन्फ्रेंस आप सोचो कोविड के 1.5 साल पहले हुआ था, ओके, समवेयर इन 2018, आज 4 साल हो गए, ओके, एंड दैट मेरा जो अपना पर्सनल नेटवर्क है, बिकॉज आई डिड दैट, ग्रू ग्लोबली। उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से ही तो मेरे को इतने सारे असाइनमेंट मिलते हैं, यू अंडरस्टैंड? तो therefore the pen idea worked for me, okay, and everybody likes it कि उसका नाम लिखा हुआ है, you understand? अब यही सोचो आप, अनंत, आप क्या कर सकते हो? लेडीज may not like the pen, but कुछ ऐसा निकाल सकता है क्या? योगेश, can you give him an an advice? Yogesh? Sir, I actually started to do this during the time of the lockdown. When the lockdown initially reopened and everything was getting right back on the path, so I actually हम लोग क्या कपड़ा बच जाता है जैसे कपड़े, so I actually got masks made out of that. वो waste. Good idea, good idea. But वो उसमें किया क्या होगा कि आपने मास्क पे अपना नाम बड़ा बड़ा बाहर लिख दिया। नाम कुछ नहीं था सर, उसमें नाम नहीं था, कुछ नहीं था, बट एक कॉम्प्लीमेंटरी गिफ्ट टाइप का उसको। अच्छा, नहीं मतलब नाम अपना कहीं ना कहीं तो मेंशन करना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, बट इट्स अ मतलब लिमिटेड आइडिया ना, तो चलेगा नहीं। What you need to do is look for something which people will continue to use. अब I don't know कि जैसे बिहार में कम से कम वो लाख की चूड़ियां बहुत चलती हैं, ओके, मतलब it is even fashion for high class ladies to wear that लाख की चूड़ी, ओके, राजस्थान में भी चलती है, शायद गुजरात में भी चलती है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, बट सो मे बी उस चूड़ी के अंदर आप अपना फर्म का नाम लिखा करके एक सेट दे दिया। आई डोंट नो हाउ मच दैट विल कॉस्ट, you understand? I mean, but sir, with the issue with that thing is that it wears off and you will have to get it refilled at some point. what The inner part, black, the black. हाँ, what about it? यार ये मैं unstable हो रहा है मेरा, so I am just switching off the video. Sir, I have heard it somewhere. I don't know if it's correct or not, but it wears off after time because of usage, and you'll have to get it refilled. No, so fine. The idea is कि by next year, if you are making it as an annual gift, yes, by next year you must come out with something more creative. Okay, so yeah. You understand? एक साल तो लास्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes. Okay. But अगर कोई ऐसा चीज है जो जैसे पेन, वो चलेगा ही चलेगा। Yes. तो वो उस तरह का। अब आजकल क्या हो गया है योगेश, आपके केस में particularly, you see there are imitations of pens like Mont Blanc. Okay, now Mont Blanc is the president's pen. Okay, तो Mont Blanc, अब वही चीज शायद, I don't know, मतलब I'm just discussing it loudly. Maybe when your wife buys, your lady buys a sari, okay, अभी तो खरीद के ले गई, बोले कि it was, thank you for visiting, but since your husband also must have appreciated, we are hereby sending appreciation for him, and इस तरह से करके भेज सकते हो। I don't know whether it works for you, but उसके लिए तुम्हारे को CRM करना जरूरी है, उसके हस्बैंड का नाम तो पता लगना पड़ेगा ना। Yes. So that kind of a thing, मतलब I am saying कि उसको भेज दो, so it will be, and it is a gift not only from Kunj and company, but it is essentially a gift of love from you, okay, which Kunj and company supports. Yes. Okay, और अगर उसका स्टाइलिंग ठीक रहा, like normally a black pen with gold looks good, but it must be done very, very sophisticated, yes, so that the husband is proud to wear it.
And every time he wears it and takes it, think of what will happen to the wife. अरे ये तो मैंने दिया उसको. You understand? Maybe, I mean, think of things like this, where you are keeping the customer involved in a very, very emotional kind of a way. Okay. और कुछ कर सकते हैं योगेश? आप म्यूट ही हो जा रहे हो. हाँ. Hello, Yogesh is not there. Doesn't look like. Anyway, let's move to the next one. So CRM has just two functions. You know and recognize your customer, and you understand them. This is the main reason. The more you can know and recognize the customer. Now, by recognizing means कि उसके हाव भाव सब आप पहचान जाओ. Inside out जानना है. Ultimate aim वही होता है. और उसको completely समझ सको. That means आप empathize कर सको. So the basic is, who are your real customers and how can you serve them best, which means create resonance. Okay, this is the function of customer relationship management. Okay, it is not that customer service executives, that is only one portion. Here the idea is to keep the customer completely involved in you, ताकि वो कोई और के बारे में सोच ही ना पाए. Okay, so that's the bottom line that we talk about. Now, what else can customer CRM do? First is, you are going to be able to improve the profiling, the customer persona की हमने जो बात करी थी कल. I think Anant had left, but customer persona बनाने के लिए यही सब तो क्वेश्चन है ना. तो आपने एक बार पहले तो शुरू में अपने सर्वे से बनाया, but it is an ongoing exercise. Why? Just like you and I, हम मतलब जवान से मिडिल एज हुए या टीनेजर से जवान हुए, तो हमारा थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ चेंजेस, राइट? वही चीज कस्टमर के साथ होती है. ओके, यस्टरडे वी डिड हैव दैट कि एक कॉलेज स्टूडेंट गया और उसको एक बहुत अच्छा शर्ट बहुत अच्छे प्राइस पे दे रहा था, लेकिन वो लिया नहीं, और वो इतने इंथुजियाज्म से किया था कि मैं तो आज लेके जाऊंगा, क्योंकि कल उसके कॉलेज में एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ा फंक्शन है जिसमें वो अच्छा दिखना चाहता है, बट उसको मिला नहीं, बिकॉज वो रिटेलर उसको मतलब उसके पास वो रेंज ही नहीं था जो विच कुड रेजोनेट विथ. तो उसको दैट मीन्स अब वही स्टूडेंट जब यंग एग्जीक्यूटिव बन जाएगा तो शायद ही कुड बाय. यू अंडरस्टैंड? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ करके यू विल कीप अपडेटिंग. नाउ द बेस्ट वे टू डू दिस प्रोफाइल अपडेटिंग इज एटलीस्ट वंस अ ईयर, एटलीस्ट, इफ नॉट ट्वाइस अ ईयर. क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे तुम्हारे बिजनेस में अमित, यू मे लाइक टू डू इट ट्वाइस अ ईयर. ओके, नाउ द वे इज कि जितने आपके कस्टमर हैं, जितने लोग को आप मतलब वही कहानियां बना करके, कलर्स दिखा करके आप चूज करो उसके, you know, and make a game around it. Okay, now once you get that feedback, then you know कि आगे क्या आने वाला. So this is the first use of customer profiling. Now then once we have done the profiling, then we want to know कि उसकी buying habits क्या है. So these are the questions that need to be answered. It can be done in a way of a survey. It can be, there are very imaginative ways in which people are already doing it, so can you. Then what are the buying preference? किस समय खरीदता है, क्या खरीदता है, किस क्वांटिटी में खरीदता है, कितनी बार खरीदता है. और उसके बाद कस्टमर सर्विस प्रोफाइल जो आप लोग दोनों बात कर रहे हैं, ओके, कि धीरे धीरे आपके कंप्लेंट कैसे आए और किस तरह से आपने उसको हैंडल किया, क्या गैप्स रह गए. यू अंडरस्टैंड? तो सीआरएम का बेसिक पर्पसेस ये होता है. इज दैट क्लियर? यस सर.
Now what are the advantages? एक तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो. With more engagement you get, the customer starts now experiencing you better, and therefore your brand value, your product value automatically goes up. Because one of the most important thing in for getting good value is trust. So jitna aap engagement rakhoge, why uh, when we are in a bad state, okay, why do we go to our spouses, or in the case of Anand, why would he go to his parents? Because there is acute trust, and that is why the relationship is most valued. Do we agree? Yes, sir. Yeah. So first thing, by doing this, now these are the things that once you're compiling the information, ये चीजें आपकी कंपाइल ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, जिससे आपको ये अपनी वैल्यू बढ़ाने में आसानी मिलती है. Then building value for the customer, obviously जब आप वो समझ जाते हो तो आप उसके ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, उसकी शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए, मतलब बाइंग एक्सपीरियंस के लिए उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप करने के पोजीशन में हो जाते हो. तो कस्टमर के लिए भी आप वैल्यू डिलीवर कर पाते हो. राइट? Yes, sir. So these are the two major things. Again, this goes back to the dynamic document of making your marketing strategy. फिर आप वो SWOT और SOAR again देखना चाहिए आपको. Okay. कि ये मैं कहां पहुंचा और क्या रह गया. ओके, वो एस्पिरेशन में के कहीं आसपास पहुंचा कि नहीं तो क्या करना चाहिए. Okay. So that's a major use of that. So that's it for today. I think we are quite on time today. And next what we will do is, if you all want, we can do more of this CRM, but up to you all, tell me. But then we will. सर मैं तो यूज करता ही हूँ CRM. सॉफ्टवेयर है ही मेरे पास. अच्छा, नहीं, what about you, Anand? So CRM, we use CRM, but there isn't like a software or anything. It's just in our minds. हाँ, वही माइंड्स में नहीं होना चाहिए. सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हो, but there must be a somewhere where you should be able to record these things. Yes, a database. Yes. So it can be even an Excel sheet, which can be filled with formulas and links. So something happens, so it will populate the right places and you can look at it. So, but that is necessary. So if you all want, we can do some more deep diving in this. Otherwise, I think that's enough. Then we will now get into what is known as the epitome of marketing, which is branding. Okay, and this I will handle a bit differently, particularly the first topic, brand and brand management. एक वो presentation मेरा मतलब it's probably known worldwide. So I will first give that, and then we'll build down the rest. Sure. Okay. Now there could be a little bit of disruption because कल मैंने योगेश को बताया था, I have to be relocating from Karjat to here. So हो सकता है there would be some dislocation. So what I will do is, when I'm going to be free, मतलब उस जो मेरा वहाँ चल रहा है, कुछ हैंडिंग ओवर है, कुछ टेकिंग ओवर है, वो कभी और कुछ जो मेरे यार दोस्त बन गए थे तो शाम को ही आते हैं ना, वो तो अपने अपने काम से निकल जाते हैं. So if I can get, then can I inform you by about 12 o'clock in the afternoon that we can have a class today? सर कल की बात कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं? नहीं, कल तो अब नहीं होगा जी. ये अब इस वीक संडे तक नहीं होगा. ओके. क्योंकि मेरे को बहुत सारा फोल्ड अप करना है. करेक्ट. Because this decision I have taken, which is a very quick kind of decision for a variety of personal reasons, so I have to come back. तो मेरे को बहुत जगह सब वाइंड अप करना है. मेरे अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, एक सेल्समैन का तो मतलब हम लोग कॉन्टैक्ट पे ही जीते हैं. और आप लोग को शुरू में बोला था कि जो
आप जातिवाद और वो सब करो, तो मेरा धर्म मार्केटिंग है और मेरी जात सेल्समैन है। तो आप समझ जाओ कि हाउ आई हैव तो मतलब 100-150 लोग से मेरा उठना बैठना है वहां पर। तो उनसे किसी के यहाँ जा रहा हूँ, किसी के यहाँ आ रहा हूँ टाइप रहेगा। और उसके बीच में ही अपनी पैकिंग करना, बिकॉज माई वाइफ इज नॉट हियर, शी इज स्टिल इन ऑस्ट्रेलिया। तो अकेले ही करना है, जो ये पहली बार जिंदगी में खुद करूंगा। नहीं तो दैट वाज अ पार्ट व्हिच माय वाइफ डिड। तो फॉर पर्सनल रीजंस आई एम रिटर्निंग टू पूना, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ये जो हमारी क्लासेस हैं, वहाँ आपने देखा ये कितनी क्लास हमको बिकॉज ऑफ पावर कट जो यहाँ नहीं होती, Yes. सो वो हम मतलब कैंसिल करना होता है, तो दैट ऑल्सो वर्क्स आउट वेल। Okay. तो let me see if I can at least show my face to you. So that's it. ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये भी भेज दूंगा। If there are any questions to be asked further, तो WhatsApp पे भी डाल सकते हो आप लोग, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी बात कर सकते हैं। बट ये मैं बता रहा हूँ कि अभी 8-10 दिन ये डिस्ट्रप्शन रहेगा। चलेगा सर। ओके, सो मैं कोशिश करूंगा कि आ जाऊं, बट नॉर्मली अगर 12 मैक्सिमम 1 बजे तक अगर आपको मेरा मैसेज नहीं आया, तो उस दिन तो क्लास डेफिनेटली नहीं। ओके सर, Okay, sir. चलेगा। है ना? तो चलेगा इस तरह सर। से, बिकॉज ये जो पोर्शन अब आने वाला है, दिस यूनिट इज माय फेवरेट, करेक्ट। you know, it's my favorite. I enjoy this, and I have been a consultant to a lot of people. In fact, मेरी अपनी niece, now she's a award winning person, जिसको मैंने बहुत encourage करते हैं, and she has her own company in Pune in branding, और वो तो national and international awards जीत रही है। Yeah. तो initially तो मैंने उसको हाथ पकड़ के, then she did her course, and of course she is a lot better than me. So देखूंगा अगर एज अ गेस्ट लेक्चर अगर वो आ सकेगी, बिकॉज शी इज जस्ट बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी। तो एक आधे घंटे का इंटरेक्शन अरेंज करने की कोशिश करता हूँ इन एक्सपर्ट ओपिनियन। सो दैट लेट मी कम बैक टू पूना, देन इट इज पॉसिबल। Okay, sir. ओके, लेकिन फिर उसके टाइम में आप लोग आ सकोगे नहीं आ सकोगे, ये वाली प्रॉब्लम। वो तो Right. We'll try. वो We'll try our best. हाँ, Yes, sir. when it is in fact for particularly for Anand, I think she has done some in clothing also. एक फैशन डिजाइनर के लिए भी उसने कुछ काम किया है, and that won some national awards. It might be useful, Yes, but sir. I want the other two also to come for that. No, तो देख लेते हैं, अभी पहले पूना तक तो पहुंचे। All right then, have a good evening.